Friends, I welcome you all to my channels. So here is another video for you on arithmetic progressions. The question here is, in an AP given D is equal to 5, S 9 is equal to 75, find A and A9. So given D is equal to 5 and S 9 is equal to 75. So we have to find the value of A and A9. So S 9, that is the sum of 9 term. So that is n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 75. So n here is 9, so 9 upon 2, so 2a plus 9 minus 1, d is given here is 5 is equal to 75. So 9 upon 2, 2a plus 8 into 5, 75. So 9 upon 2 into 2a plus 40 is equal to 75. So 9 upon 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो गया 9a प्लस 9 इंटू 40 and divide by 2, that is 180 is equal to 75. So 9a is equal to 75 minus 180 minus 105. So 9a is equal to minus 105. So value of a will be minus 105 divided by 9. So 3 से इसको कैंसिल किया तो हो गया minus 35 upon 3. So value of a here is minus 35 upon 3. So we have to find the value of S A9. So A9 will be given, so we know the formula of AN is equal to A plus N minus 1 into D. So A9, so value of A is minus 35 upon 3 plus N is 9 minus 1 and D is 5. So minus 35 upon 3 plus 8 multiplied by 5. So minus 35 upon 3 plus 40 upon 1. The LCM is 3. So minus 35 plus 120. अब 120 से 35 को माइनस किया, 5, 8. So 85 upon 3. The 9 term here is A9 is 85 upon 3. और A हमने निकाला था, A बराबर निकाला था minus 35 upon 3. So ये दो आंसर हैं इस क्वेश्चन के, A9 85 upon 3 and A is minus 35 upon 3. The second part, here is A is equal to 2
D is equal to 8 and Sn is equal to 90. We have to find the value of n and an. So substituting for value of, so Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. That is the formula for Sn, sum of n and term. So Sn here is 90, n upon 2, 2 into 2, n minus 1, d is 8, n upon 2, 4, n minus 1, so multiply by 8, 90 upon 1. ये हो गया, 9 से मल्टीप्लाई किया, पहले ब्रैकेट खोलें, सो n अपॉन 2 इंटू 4, 8 से मल्टीप्लाई किया 8n माइनस 8, सो n अपॉन 2, तो 4 इसमें से माइनस किया तो हो गया 8n माइनस 4. तो n से n अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू 8n, एट एन स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, दैट इज 4n स्क्वेयर, n मल्टीप्लाई बाई 4, 4n डिवाइड बाई 2, सो माइनस 2n. सो ये हो गया, n अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, तो ये इक्वेशन बनी हमारी 4n स्क्वेयर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0. 90 को हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिया. अब ये सभी जो है 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो अगर 2n स्क्वेयर माइनस 1n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. अब हमने फैक्टराइज करना है इसको, माइनस 45 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ माइनस 90. अब 90 के दो फैक्टर्स होंगे, 10 इंटू 9, जिनको के मल्टीप्लाई करके 90 बनता है, डिफरेंस करके 1 आता है. तो 2n स्क्वेयर माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. 2n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. 2n कॉमन, सो n माइनस 5, 9 कॉमन, n माइनस 5, 0. तो फैक्टर बने n माइनस 5, another factor 2n plus 9 is equal to 0. So factor away n minus 5, and the second factor is 2n plus 9 is equal to 0. So putting 0 for both factors, n minus 5 is equal to 0 or 2n plus 9 is equal to 0. So here value of n is 5 or 2n is equal to minus 9. So n will be minus 9 by 2. So n upon 9 by 2. So n is equal to minus 9 by 2 is rejected, because so n cannot be a negative term. So n term cannot be, so number of term cannot be negative. So therefore n is equal to 5. So अब हमें इसमें निकालना था वैल्यू ऑफ n, n हम निकाल चुके, दैट इज 5. अब निकालना a n मीन्स फिफ्थ टर्म. So n 5 will be, because a n is equal to a plus n minus 1 into d. So n is 5 and a5 will be, a value of a is 2, n is 5 minus 1 and d is 8. Two plus 4 into 8,
2 plus 32, that is 34. So A5 is 34. The answer are, so n is equal to 5 and A5 is equal to 34. These are the two answers for the question. So हमें इसमें दो पार्ट निकालने थे, n, वैल्यू ऑफ n एंड an. The next part is so given a is equal to 8 and an is equal to 62 and Sn is equal to 210. We have to find the value of n and d. So an means L, last term is 62 and the first term is 8. So Sn, we have to find the Sn and value of n and d. So we know Sn is equal to n upon 2 into a plus l. तो ये भी एक फार्मूला है Sn का, 210 n upon 2, a is 8 and l is 62. तो n upon 2 into 70 is equal to 210. So ये बन गया 35n is equal to 210. So 35n is equal to 210. So value of n will be 210 divided by 35, that is 6. So n is 6. So the value of n, we have find out the value of n is 6. Now we have to find the value of d. So for that we have to use this formula, an is equal to 62. So since an is equal to a plus n minus 1 into d, so an is 62, a is 8, n is 6 minus 1 multiplied by d, 62 is equal to 8, 5d. So 8 को इधर किया तो क्या 62 minus 8 is equal to 5d. So 5d is equal to 54. 62 minus 8 is 54. So 5d is equal to 54 and d will be 54 divided by 5. The answer are n is equal to 6 and d is equal to 54 divided by 5. So ये दो आंसर हुए इस पार्ट के. नेक्स्ट पार्ट इज the fourth part, an is equal to 4, d is equal to 2 and Sn is equal to minus 14. So an is 4, means last term here is 4 and d is equal to 2. So putting value of Sn, so Sn is equal to, so first we take the value of q, because we have to find the value of a here by using a formula of an. So an is equal to a plus n minus 1 into d is equal to 4. An is, that is 4. So a is equal to, so value of n, d is 2
So a plus 2n minus 2 is equal to 4. So a will be equal to 4 minus 2n plus 2, 6 minus 2n. The value of a here is 6 minus 2n. an is equal to 4. So a plus n minus 1 into d. So d is 2. So 2 into n, 2n minus 2. So 2 को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया 6. 2n माइनस हो गया तो वैल्यू ऑफ a इज 6 माइनस 2n. So substitute this value in Sn. So Sn is equal to a plus n upon 2 into a plus l. Sn minus 14 n upon 2, a here is 6 minus 2n, and the l is the last term here is 4. So n upon 2 to minus 2n, 6 plus 4 is 10, 10 minus 2n, so minus 14. So n upon 2, अब n upon 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10n माइनस, सो 10 2n मल्टीप्लाई n अपॉन 2 तो बन गया 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14. n upon 2 multiply 10, so 10n divided by 2, that is 5n. So n upon 2 multiply 2n minus 2n, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो n स्क्वायर, सो ये बन गया माइनस 14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर. अब हम इनको इस तरफ ले आते हैं क्योंकि n स्क्वायर माइनस में तो इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव. So n square minus 5n minus 14 is equal to 0. So value of जो गया n square minus 14 के फैक्टर्स हुए 7 into 2. So minus 7n plus 2n minus 14 is equal to 0. So n minus 7, so plus 2 into n minus 7 is equal to 0. So n minus 7, n plus 2, 0. So n minus 7 is equal to 0 or n plus 2 is equal to 0. So value of n is 7 and here is minus 2. So negative value n minus 2 is rejected because n cannot be negative. N is equal to minus 2 is rejected. Therefore n is equal to 7. So value of n is 7. So we have to substitute the value of n in equations. हमने पीछे a की वैल्यू निकाली थी, a is equal to 6 minus 2n. हम उसको दोबारा चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ लिखा था a n is equal to a plus n minus 1 into d. So 4 बराबर था a n माइनस 1 d था 2, सो हो गया a प्लस 2n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4. सो वैल्यू ऑफ a वाज 4 प्लस 2 माइनस 2n. तो 6 माइनस 2n ये वैल्यू थी a की जो हमने पहले निकाली थी. अब इस n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी सिर्फ
तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n हेयर इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन थी 1 जो हमने पहले निकाली थी, तो n we have to put here is value of n, तो 6, so a will be equal to 6 minus 2 into 7, and that will be 6 minus 14, that is minus 8. So answer are a is equal to minus 8 and n is equal to 7. So ये निकाला था value of n and value of a here. So n is 7 and value of a is minus 8. So ये 4 पार्ट थे क्वेश्चन के, मैंने ये सॉल्व कर दिए. So next question. The next question is, how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? The AP here is 9, 17, 25. So A here is 9 and D will be 17 minus 9, that is 8. And the sum is Sn is 636. So we have to find the value of n. So put the value of Sn. So formula of Sn is n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sn here is 636. N upon 2, a value of a is 9, n minus 1, value of d is 8. So n upon 2 into 18 plus 8 से मल्टीप्लाई किया 8n minus 8, n upon 2, so 8n plus 10, 18 में से 8 माइनस किया आ गया 10, तो 8n plus 10, तो n upon 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया ये 4n square, n into 8n, that is 8n square divided by 4, that 2, 4n square plus 10 into n divided by 2, that is 5n, is equal to 636. अब हमने इसको एक ही तरफ ले लेना, तो 4n square 5n minus 636 is equal to 0. So using the discriminant quadratic formula here, so we have to factorize this given equations here, quadratic equations. So using quadratic formula, so a here is 4, b is 5 and c is minus 636. So d, that is b square minus 4ac will be 5 square of 5 minus 4 into 4 into c is minus 636. तो 25 प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई किया 4 into 4 16, 636 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 6 are 96, 16 3s are 48 plus 9 is 57, 16 into 6 96 plus 5 101, 101. So D here is ऐड करें तो 10 0 2 0 1. So this is D, discriminant. So using the quadratic formula here for factorization,
So n will be equal to minus b plus minus under root d upon 2a. So minus b, so minus 5, so b is 5, so minus 5 plus minus 10201 divided by 2 into a is 4. So minus 5, अब इसको प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 201 is 101 divided by 8. So ये बन गया माइनस 5 प्लस 101 डिवाइड बाई 8 और माइनस 5 माइनस 101 डिवाइड बाई 8. तो 5 माइनस किया गया 96/8 और माइनस 106/8 से आ गया 12 और हो गया माइनस 53/4. सो इसमें ये जो नेगेटिव है ये रिजेक्ट हो जाएगा. माइनस 53/4 इज रिजेक्टेड बिकॉज दिस इज एन नेगेटिव टर्म. So n is equal to minus 53/4 is rejected being a negative terms. So therefore value of n, the accepted value of n is 12. So this is the answer for the questions. So n is equal to 12, that is it. So इसमें number of terms are equal to 12. तो 12 term है जिसका sum जो है 636 है. Next question. The next question is the first term on f is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. The first term, that is a, is equal to 5. The last term in an or L is equal to 45 and the Sn is 400. We have to find value of n, ये निकालनी है, and common difference, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है. So using formula of Sn, so Sn is equal to n/2 into a plus L. So Sn is 400. So n/2, a is 5 and L is 45. ऐड करके आया 50. सो ये बन गया 2 से कैंसिल किया 25n is equal to 400. So value of n will be 400 divided by 25, ये आ जाएगा 16. एक आंसर आ गया हमारा n इज इक्वल टू 16. अब निकालना d. सो d के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे a n का. सो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. a n here is 45 and a term is 45. a is 5 and n is 16. 16 minus 1 multiply by d. So 45, 5 इधर किया तो minus 5 is equal to, इसमें ये बन गया 15d. 16 minus 1 15d. तो 40 is equal to 15d. So d will be 40 divided by 15. So d is 40 divided by 15. So 5 से कैंसिल किया, काटा इनको, तो आ गया 8/3. इस तरह से दो आंसर आए n is equal to 16 और d is equal to 8/3. Here these are the two answers for the questions. n is equal to 16, d is equal to 8/3.
Next question. The next question here is the first and the last term of AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is D, how many terms are there and what is their sum? The first term, that is the A. The A is 17. The first term is 17. The last term AN or L is equal to 350. We have to find and the D is common difference here is 9. So how many terms are there? So we have to find the value of N and next is find SN. ये दो पार्ट हमें इसमें निकालने हैं. So AN given is 350, D is given, A is given. So using formula of AN, so AN is equal to A plus N minus 1 into D. So AN is 350, A is 17, N minus 1 and D is 9. So 350 minus 17 is equal to 9 into N. So 9N minus 9. So 9 से अब इधर यह ऐड हो जाएगा. 350 में से 17 गया 333 प्लस 9. So 333 plus 9 is equal to 9N. So 342 is equal to 9N. So N will be 342 divided by 9. So 9 से डिवाइड किया तो आ गया 3 and 8. तो N is 38. The value of N is 38. How many terms are there? There are 38 terms. So value of N is 38. We have to find out S38. So Sn is equal to N upon 2 into 2A plus N minus 1 into D. और दूसरा फार्मूला A प्लस L का है. दूसरा फार्मूला है N अपॉन 2 इंटू A प्लस L. सो कोई सा भी हम फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं. सो S38, so N is 38 upon 2, A is 17 and L is 350. So S38 19 multiply 350 plus 17 367. अब इसको मल्टीप्लाई करें 367 को 19 से. 9 7s are 63, 9 6 are 9 6 54, 54 और 6 60, 27 33, 7 6 3 3 7 9 6. तो यह 6973. सो सम ऑफ 38 टर्म इज 6973. तो ये हो गया इसका सेकंड आंसर एंड फर्स्ट आंसर वाज n इज इक्वल टू 38. तो ये दो आंसर, इस क्वेश्चन के दो आंसर थे. n बराबर 38 और Sn इज इक्वल टू 6973. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज find the sum of the first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and the 22nd term is 149. अब इसमें क्या दे रखा है? सम ऑफ, हमें इसमें सम ऑफ 22 टर्म्स निकालने हैं. मीन्स n is given 22, D is given 7 and the AN is given 149. So D, any common difference is 7. N is equal to 22. Number of terms are 22 and the A22 is given 149.
So since an is equal to a plus n minus 1 into d, so n is 149, a plus n is 22 minus 1 and d is 7. 21 multiply 7, 149. So 149 is equal to a plus 7 से मल्टीप्लाई किया 147. So a will be 149 minus 147. So value of a is 2. So a की वैल्यू आई हमारे पास, फर्स्ट टर्म आई है 2. अब हमने निकालनी है सम ऑफ द 22 टर्म. हमारे पास a है 7, n है, n की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, सिर्फ हमें Sn 22 निकालना. सो सिंस Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे. सो S22 विल बी 22 अपॉन 2. a की वैल्यू अभी निकाली थी 2, n इज 22 माइनस 1 और d है 7, d इज 7. तो इससे कैंसिल किया 2 से, तो हो गया 11, हो गया 4 प्लस इसमें से माइनस किया 21 मल्टीप्लाई 7, सो 11, 4 प्लस 147, 11 मल्टीप्लाई इसको जो जोड़ के आया 151. सो 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 1s are 11, 55 प्लस 1 56 और ये हो गया 1661. सो S22. तो सम ऑफ, अब आंसर हमारे पास आया, आंसर इज 1661. तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म इज 1661. तो यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP. So dear students, I have given you solutions for some of the question from this exercise. So I request you to share, like the video and share it and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.